নমস্কাৰ মই এপলিনা টাইমেটলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ লৈ আহিছো। ইতিমধ্যে দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু এই পৰাজয়ৰ পিছতে এতিয়া আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰধান অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখলৈ আহিছে আৰু সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত এতিয়া মন্তব্য কৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে ক্ষমতাৰ বাবে তেওঁলোকে ৰাজনীতিলৈ অহা নাছিলে, ক্ষমতাৰ বাবে ৰাজনীতিলৈ নহাকৈ বা বিৰোধী হৈ তেওঁলোকে ৰাইজৰ বাবে কাম কৰি যাম বুলি পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে দিল্লীৰ জনসাধাৰণক। আৰু সমান্তৰালভাৱে আজি যি আম আদমি পাৰ্টিৰ পৰাজয় ৰাজধানী দিল্লীত, সেই পৰাজয়ত ৰাইজে জনসাধাৰণে যি বিচাৰ কৰিছে বা জনসাধাৰণে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে। এতিয়া প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। লৈ আহিছো এই মুহূৰ্ততে ডাঙৰ খবৰ, দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ফলাফল ঘোষণালৈ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। সকলো তথ্য ৰাইজৰ সিদ্ধান্তক গ্ৰহণ কৰিছো। বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাক অভিনন্দনো জনালে কেজৰিৱালে। পৰাজয়ৰ পিছতে প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। বিৰোধী হৈও কৰি যাম ৰাইজৰ কাম, এই মন্তব্য অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। বিৰোধী হৈও ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে পুনৰ জনসাধাৰণক। ক্ষমতাত থাকিবলৈ অহা নাই ৰাজনীতিলৈ, ক্ষমতাত নথকাকৈ ৰাইজৰ হকে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। বিজেপিয়ে জনতাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব বুলি আশা কৰিছো, ক্ষমতাত নাথাকিলেও ৰাইজৰ হকে কাম কৰি যোৱাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান এতিয়া কেজৰিৱালৰ। জনসাধাৰণক পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। পৰাজয়ৰ পিছতে কেজৰিৱালে আগবঢ়ালে প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া। দিল্লীবাসীয়ে কিদৰে বিচাৰিছিলে, দিল্লীবাসীয়ে কি বিচাৰিছিলে সেয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত কৰিছে আৰু দিল্লীবাসীৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে কেজৰিৱালে। আজিৰ দিনটোত আম আদমি পাৰ্টিয়ে 2013 চনৰ পৰা যি শাসন চলাই আহিছিল ৰাজধানী দিল্লীত, সেই শাসনৰ পৰিৱৰ্তে আজিৰ দিনটোত যি পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে সেই পৰাজয়ৰ বাবে আদৰণি জনাইছে ৰাইজৰ সিদ্ধান্তক আৰু সমান্তৰালভাৱে বিজেপি দলৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাক জনাইছে ধন্যবাদ। এই প্ৰত্যাহ্বান জনাই আম আদমি পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে যি তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ৰাজধানী দিল্লীত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেই বিজয়ৰ বাবে যথেষ্ট শ্ৰম কৰিব লগা হৈছিল। প্ৰতিটো শ্ৰমৰ বাবে আজিৰ দিনটোত অভিনন্দন জনাইছে আৰু সেই শ্ৰমক ধন্যবাদ জনাইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আৰু সমান্তৰালভাৱে কৈ উঠিছে যে ক্ষমতাত নাথাকিলেও ক্ষমতাৰ বাবে তেওঁ ৰাজনীতিলৈ অহা নাই বুলি কৈছে, ক্ষমতাত নথকাকৈও তেওঁ ৰাইজৰ হকে কাম কৰিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে কিন্তু দিল্লীবাসীক যিধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব পাৰিলেই হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আৰু কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পৰাজয় বৰণ কৰাৰ পিছতে। প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতে। লৈ আহিছো আমি এই মুহূৰ্তত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সেই মন্তব্য। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और
जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार।